Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Welcome to this edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद अर्जुन। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़ी ताजा खबरें आप तक लाएंगे और उन पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए ऑनलाइन आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ जयंता दास। जयंता नमस्कार, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। थैंक यू। और अब हेडलाइंस के साथ हैं अर्जुन चौधरी। RBI allows certain individuals and small borrowers more time to repay the debt. Banks to give priority loans to vaccine makers, hospitals and COVID-related health infrastructure. Cabinet Committee on Economic Affairs clears strategic disinvestment and transfer of management control of IDBI Bank. And at the stock market, Sensex climbs 424 points. Nifty advances 121 points. भारतीय रिजर्व बैंक ने कुछ व्यक्तियों और छोटा ऋण लेने वालों को ऋण वापस करने के लिए और समय दिया। वैक्सीन निर्माताओं, अस्पतालों और कोविड संबंधित स्वास्थ्य मूलभूत ढांचे से जुड़ी संस्थाओं को बैंक प्राथमिकता के आधार पर देंगे ऋण। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने आईडीबीआई बैंक में रणनीतिक विनिवेश और प्रबंधन नियंत्रण के हस्तांतरण को दी मंजूरी। और शेयर बाजारों में सेंसेक्स 424 अंक बढ़ा, निफ्टी में 121 अंकों की वृद्धि हुई दर्ज। In our top story, RBI today allowed certain individuals and small borrowers more time to repay their debt and allowed banks to give priority loans to vaccine makers, hospitals and COVID-related health infrastructure, as it announced support measures to cushion the pandemic's blow on the economy. In an unscheduled address, RBI Governor Shaktikanta Das said the moratorium of up to 2 years will be available to individuals and small and medium enterprises that did not restructure their loans in 2020 and were classified as standard accounts till March 2021. This facility will be available to borrowers with a total exposure of 25 crore rupees. The governor said RBI will give 50,000 crore rupees of liquidity support to banks for providing fresh lending to a wide range of entities, including vaccine manufacturers, importers and suppliers of vaccines and priority medical devices, hospitals, dispensaries, pathology labs, manufacturers and suppliers of oxygen and ventilators, importers of vaccines and COVID-related drugs, logistics firms and also patients for treatment. These loans of up to 3 years tenor will be obtainable at the repo rate and will be available till March 31st, 2022. Also, RBI will buy 35,000 crore rupees of bonds under the Government Securities Acquisition Program GSAP, India's version of quantitative easing, on May 20. It has also allowed banks to dip into their floating provisions to set aside money for bad loans. The governor said the central bank sees the outlook highly uncertain and clouded with downside risk, but doesn't see a major change to inflation forecast. Jayanta, once again, a warm welcome to you in Market Mantra. Thank you, Arjun. Jayanta, we had discussed in some detail during Money Matters about the two types of provisioning that the central bank is doing for those who have borrowed. But we are seeing from the business community, their feedback is that they prefer the restructuring of the loans. What is your view on that point as opposed to the moratorium, which is more broad-based? Well, see, last year, as you all know, the moratorium was across all businesses and it was not categorized. Under restructuring 2.0, what the RBI proposes is, specifically for small business and MSMEs who has not opted for last year's program, a new program will be offered, and whereby they can do a restructuring of their overall loan, and it goes beyond just a moratorium, leave in that sense. What I believe is finally it's for the banks to frame a policy based on the RBI directive, and we have to exactly see what banks offer to their customers in terms of how they wish to restructure these loans. A simple restructuring over the next 2 years wouldn't just help.
I think we should also have to come in with a moratorium phase, specifically that, we are reading down under a second wave, and a third wave also might be imminent. So if you look at the next 12 months of business activity, there will be, severe challenges. So as I said, simple restructuring, while it's a welcome move in terms of allowing a much needed headway for all these small businesses and MSMEs to, take care and plan their overall production and financial and cash flows and all. But I do believe that moratorium also should be something which the bank should consider this time too. और जो दूसरी अनाउंसमेंट मेजर हुई है 50,000 करोड़ रुपीस की लिक्विडिटी सपोर्ट देने की बात कही है, जो कोविड से रिलेटेड जो भी कंपनियां हैं, चाहे वो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स हों, इंपोर्टर्स सप्लायर्स और वैक्सीन हों, या प्रायोरिटी मेडिकल डिवाइसेस के इंपोर्टर्स हों, ये आपको कितना इंपॉर्टेंट लगता है? 3 वर्ष के लोन देने की बात की गई है रेपो रेट पर 31 मार्च 2022 तक. बिल्कुल. देखिए, सबसे यहाँ पे अच्छी बात तो ये है कि ब्याज दर में पूरी तरह से एक सब्सिडी सीधी तरह से आरबीआई ने घोषणा की है, जहाँ पे रेपो रेट इज द लोएस्ट रेट अवेलेबल इन द मार्केट, राइट? क्योंकि टिपिकली बैंक्स उसको ऊपर प्लस अपना मार्जिन से कमीशन जैसा बोलने लगा के नॉर्मल लोन बेचते हैं. तो ऐसी स्थिति में इट्स अ वेरी वेलकमिंग मूव, जहाँ पे आपको सब्सिडाइज लोन का एक ऑफर किया जा रहा है, और ये टारगेटेड लोन रहेगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि हेल्थ केयर क्षेत्र में जो भी नया कंपनी, मौजूदा कंपनी एक्सपेंशन या नया प्रोजेक्ट वगैरह लगाना चाहते हैं, 2022 तक ये उनको छूट अलग से मिलेंगे. और सरकार की तरफ से इस वक्त एक बहुत बड़ा कोशिश ये है कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को रातों रात रैम्प करना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंट्री में स्टेट का अंडर हेल्थ सेक्टर आते हैं, और स्टेट में सबसे स्टेट इज ऑल्सो द लार्जेस्ट स्पेंडर इन द हेल्थ सेक्टर. तो बहुत जरूरी है समझना कि उसके बावजूद भी इस वक्त जो कमियां हैं हमारा हेल्थ क्षेत्र में, वो कहीं ना कहीं बहुत जरूरी है कि निजी क्षेत्र में आके अलग से इन्वेस्टमेंट हो. और व्हेन आई से प्राइवेट सेक्टर, इट डजंट मीन ओनली द बिग कंपनीज, स्मॉल कंपनीज, मीडियम कंपनीज, एमएसएमई सेक्टर में कुछ कंपनीज. आज का तारीख में एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं कहूँ, कोई कंपनी उड़ीसा में जैसे ऑक्सीजन फिटिंग्स का भी एक फैक्ट्री खोलते हैं, तो वो भी बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण रोल रहेगा उन लोग को ओवरऑल. तो ये कोविड तो कहीं खत्म होने वाला नहीं है बहुत जल्दी, सबको पता है. एक वेव आते रहते हैं, सेकेंड वेव होगा, उसके बाद शायद थर्ड वेव होगा. हमेशा देखा जाता है थर्ड वेव का जो स्ट्रेंथ है वो थोड़ा बहुत कम होता है, लेकिन डिस्पाइट दैट बहुत जरूरी है कि कोविड और साथ में हेल्थ क्षेत्र के लिए, हेल्थ सेक्टर के लिए ओवरऑल सपोर्ट, प्रोटेक्शन, और इसके अलावा अवेलेबिलिटी ऑफ फैसिलिटीज. आज हम सबको पता है देश में इस वक्त सिर्फ कोविड का इश्यू है नहीं, साथ में ऑक्सीजन का प्रॉब्लम है, साथ में इक्विपमेंट जो है ऑक्सीजन का साथ लगते हैं उसका कमी है, सिरिंजेस का बात आ रहा है, दवाइयों का बात आ रहा है. हालांकि दवाई तो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री बना नहीं सकता है, लेकिन ये जरूर है कि आसपास का जो क्षेत्र है उसमें अगर ये अलग से सब्सिडाइज लोन प्रोवाइड किया जाए, तो उम्मीद ये है कि कहीं ना कहीं हम लोग ओवरऑल पैन इंडिया बेसिस में एक अलग से निवेश का दौर हम देख सकते हैं इस क्षेत्र में. Jayanto, the loans are of up to 3 years tenure. Of course, you have the subsidy of the repo rate at which you're borrowing. So the interest is at the repo rate itself. But whenever you set up a startup or a business of this nature where you have to build and operate, is it a knockdown unit because there is capital expenditure and working capital requirements? For instance, the supply of oxygen to a knockdown unit hospital. So what kind of cash flow, what are the conditions if you want to get into this particular scheme? See, any company in the small and medium sector would obviously be entering into any new expansion or investment based on the overall investment they have, because it's not an outright loan where you go to a bank A and say, see, I need 100 rupees. The project costs 100 rupees and I need 100 rupees. So please fund me that amount under the new scheme and so that I can set up. It's not going to be like that. It's going to be like any project which you're looking for, which you're going to invest for, whereby, typically the ratio of investment is, for every 25 rupees you put in the government, the bank would like to put in 75 rupees. And that's how typically you divide the project. Sometimes the bank, depending on the promoter's capability, also asks for a bit more. Maybe they say, hey, for every 100 rupees, you bring in 30 rupees and we'll give in 70 rupees. But that's how the division typically happens. So based on that, I think any project under this scheme also will be equally treated in the same way. The added facility is when you go in for a loan, they're going to give you a subsidized loan.
which, if you straight away is a discounted loan of at least 4 to 5%. That's the discount amount typically if you look at, if you compare it with the repo rate. So that's one huge, upstart which you have. Obviously, the question is very valid when you say, for a startup specifically, how do you expect a startup to have a huge capex with this sort of support initially, and and given the loan is only for a period of 3 years? What I believe is that's where the maths comes in. And having said that, it's also important to understand that it's an extension of the existing project loan which is already there. The extension is in terms of an added facility of a subsidized loan. And I guess why only new companies? Even there will be a lot of existing companies based on their projects, they would like to do an expansion. So it need not be just startups we are talking of. Maybe startups are 8 to 10 or 15%. I'm just making a wild guess. But the overall focus will be companies, players who are already in this particular sector. And they would like to go in for expansions. They would like to go in for extensions. They would like to go in for improvisation, putting in better machines and things like that. Or maybe adding 2 more machines if they're already doing some work related to the healthcare sector. So I think for them, it's obviously a very attractive, offer in terms of bringing it. जयंतु ब्रीफली जो आरबीआई ने 35,000 करोड़ बॉन्ड्स जीसैप जो उनकी स्कीम आई पिछली पॉलिसी में जिसको इंडियाज वर्जन ऑफ क्वांटिटेटिव ईजिंग कहा जा रहा है, उसके बावजूद उन्होंने ये भी साथ में कहा है उसके इस स्कीम के द्वारा वो लिक्विडिटी डालेंगे इकोनॉमिक सिस्टम में, लेकिन उन्होंने कहा है कि वो इन्फ्लेशन फोरकास्ट में कोई खास बदलाव नहीं देखते. तो ये आपको सिग्निफिकेंट लगता है, एक कहें कि भरोसा दिलाने वाली स्टेटमेंट लगती है? देखिए, इनफैक्ट आज जब इस तरह का अनाउंसमेंट हुआ था कि आरबीआई गवर्नर साहब ने अलग से एड्रेस करेंगे सुबह 10 बजे, काफी अफवाह ये फैला हुआ था कि शायद इंटरेस्ट रेट में छूट होने का एक मेजर स्टिमुलस सरकार की तरफ आरबीआई की तरफ से आने वाला है. लेकिन ये जरूर है कि इन्फ्लेशनरी इस वक्त स्थिति में अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ता है तो इन्फ्लेशन के ऊपर प्रेशर बेशक दबाव रहेंगे. लेकिन आई एम गिविंग अ बेनिफिट ऑफ डाउट हियर टू द मॉनेटरी पॉलिसी टीम as well as to RBI who are managing the situation. And I think जहाँ पे भी इन्फ्लेशन दबाव आएंगे वो उस हिसाब से अपना रेट का एडजस्टमेंट करके और ओवरऑल इकोनॉमिक सिचुएशन का ध्यान रखते हुए निर्णय लेंगे. लेकिन इस वक्त कहना कि इन्फ्लेशनरी सिचुएशन के ऊपर ओवरऑल शायद अगले 6 महीना 8 साल में दबाव नहीं आएगा, ये मैं मानता हूँ इज अ बिट ऑप्टिमिस्टिक थिंकिंग पर्सनली. Even more briefly, what are the expectations of bad loans as mentioned in the story? Sorry, what are the expectations of a bad loan? I mean, that's why the provisioning is being made, right? Yeah, exactly. Very good question. See, obviously, as I said, this time, if you see all the curfews which are being practiced across the state has not touched the industries to close down, and specifically the small and medium-sized industries. And that's one of the reasons maybe, although they have slowed down, but unless there is a desperate situation, I mean, there is a figure of around 160 or 170 districts which are most seriously affected, where people have been told not to move out from their houses. So anyway, maybe in those cases the labor can't reach. But the scenario for bad loan remains as a threat. As it was last year, it remains as a threat this year. And that's where I guess the banks have to do a restructuring, reassessment of all the projects which they're providing for. And it has to come in with a humanitarian touch. But having said so, you can't have banks crashing, with a humanitarian touch approach to bad businesses and all. And I think government periodically will have to take a review of how the overall sector, specifically, the bad apples in the businesses are turning up, who have been and would be disturbed by, this COVID second wave, specifically your curfews and, local shutdowns and lockdowns. लेते हैं अगली खबर. आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने आज आईडीबीआई बैंक लिमिटेड में रणनीतिक विनिवेश और प्रबंधन नियंत्रण के हस्तांतरण को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी. फिलहाल एलआईसी आईडीबीआई बैंक का प्रमोटर है तथा प्रबंधन का नियंत्रण भी उसके पास है. भारत सरकार इस बैंक की सह प्रमोटर है. भारत सरकार और एलआईसी में विनिवेश की सीमा भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से बैंक के पुनर्गठन के समय तय की जाएगी. भारत सरकार और एलआईसी की आईडीबीआई बैंक में 94% से अधिक हिस्सेदारी है. इसमें भारत सरकार के 45.48% और एलआईसी की 49.24% शेयर है.
LIC बोर्ड ने एक प्रस्ताव पारित किया था जिसके अनुसार LIC IDBI बैंक में विनिवेश के जरिए अपनी हिस्सेदारी घटा सकती है। LIC सरकार के साथ मूल्य, मार्केट आउटलुक, वैधानिक अनिवार्यताएं और पॉलिसी धारकों के हितों को ध्यान में रखते हुए प्रबंधन नियंत्रण के संबंध में भी निर्णय ले सकती है। ये कितना इम्पोर्टेंट है डिसइन्वेस्टमेंट का सुचारू रूप से चलना करंट समय में जब पैसे की बहुत जरूरत है सरकार को वेलफेयर मेजर्स पे खर्च करने के लिए। देखिए, डिसइन्वेस्टमेंट का जो प्रतिक्रिया है, जो नीति है, ये कोविड हो चाहे ना हो, सरकार का एक माइलस्टोन लेड रोड मैप बजट के टाइम में भी उन्होंने बता दिए थे। और पिछले साल का जैसे इस साल भी कोशिश किया जाएगा कि खास करके, हालांकि पिछले साल उन्होंने एयर इंडिया को डिसइन्वेस्टमेंट नहीं कर पाए, इस बार एयर इंडिया का डिसइन्वेस्टमेंट और इट लुक्स मोर लाइक अ रियलिटी, बिकॉज बहुत जल्दी शायद हम लोग को कुछ खबर मिलने वाला है एयर इंडिया की तरफ से। जैसे IDBI के बारे में बात करें, LIC IDBI सारे के सारे क्षेत्र में डिसइन्वेस्टमेंट का वायदा सरकार ने किया है। और ये जरूर है कि हाँ, पैसा का हमें जरूरत है गवर्नमेंट को, और जब जरूरत ना भी हो, ऐसा कभी स्थिति होता नहीं कि सरकार का पैसा का जरूरत नहीं होता है, क्योंकि बेस्ड ऑन द इनकमिंग ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस आपका स्पेंडिंग ओवरऑल मैप होता है। और ऐसे स्थिति में मैं मानता हूँ इट्स कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रोसेस, इज नॉट समथिंग न्यू। ऐसा कुछ नया उन्होंने अलग से बताया नहीं। ये जरूर है कि बजट में हमारा वित्त मंत्री जी ने जो ऐलान किया था विनिवेश का एक माइलस्टोन रोड मैप, आप जो भी कहे, उस हिसाब से बिल्कुल सरकार का मतलब ओवरऑल जो प्रोग्रेस है, बिल्कुल बजट का अनाउंसमेंट का साथ साथ भी चल रहा है। Jayanta, if LIC is also going to be disinvested in consultation with the central bank RBI, and you have IDBI as a subsidiary effectively of LIC, which is a promoter of IDBI along with the center who has management control of IDBI Bank Limited. So isn't it strategically or tactically better to disinvest LIC first and then you have IDBI automatically disinvestment because it's a subsidiary of LIC? Well, see, your question is valid strategically in terms of, if you do the holding company disinvestment first and then going for it. But then I believe, let's give a benefit of doubt to the government. They would have a special reason for letting off, its shareholding partly or wholly. I don't think they'll do a wholly let off, but then it also happens, if they get a better valuation in terms of the existing market rate, they would like to go ahead and do that first, because to what extent they would like to give up, control, both management as well as stakeholder control and things like that. And that's something which the government, being the final owner of both these two companies, they have to take. And I think the decision has been taken likewise. जंतु, जो RBI के मेजर्स, स्पेशल मेजर्स आए हैं, सपोर्ट मेजर्स, अभी जो इकोनॉमी है उसको सपोर्ट करने के लिए, इसके अलावा आपको क्या लगता है और कौन से मेजर्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं सेंट्रल बैंक से या गवर्नमेंट से, इन व्यू ऑफ द मेजर्स व्हिच वर ब्रॉट इन लास्ट ईयर, कि अभी की जो सिचुएशन है उसको हैंडल करने के लिए आपको लगता है और रिलीफ मेजर्स आएंगे या स्टिमुलस मेजर्स आएंगे? देखिए, इस वक्त तो सरकार का प्रायोरिटी है कि ये कोविड का जो सेकेंड वेव चल रहा है उसके ऊपर कैसे फोकस करके, खास करके हेल्थ के एरिया में कैसे फोकस करके ये जो पेन है, ये जो अलग से चुनौती है, उसको किस तरह से कम किया जाए। तो दैट्स द इमीडिएट प्रायोरिटी फॉर द नेक्स्ट 2 to 3 वीक्स। आई एम श्योर एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट्स है, चाहे सिर्फ फाइनेंस मिनिस्ट्री की, जितना भी मिनिस्ट्री है, वो अपना अलग अलग से एक ब्लूप्रिंट क्रिएट कर रहा है ड्यूरिंग ये सेकेंड वेव एंड पोस्ट सेकेंड वेव। ड्यूरिंग कोविड, पोस्ट कोविड हम बोल नहीं रहे, बिकॉज कोविड कहीं जाने वाला नहीं, हमें सिर्फ सतर्क का साथ चलना पड़ेगा। किस तरह से ये जो वेव का जो अलग से एक दौरान है, उसको किस तरह से अपने को एक्सपोजर कम करना पड़ेगा, वो हमारा तो ओवरऑल नीति होना चाहिए। लेकिन सारे डिपार्टमेंट्स अक्रॉस सारे मिनिस्ट्रीज, दे आर हैविंग अ ब्लूप्रिंट ऑल्सो। और इस ब्लूप्रिंट में जो 3 ऑब्जेक्टिव्स में मानता हूँ फोकस होएगा, वो ये है कि किस तरह से डिपार्टमेंट का अंदर जो भी नीतियां है, किस तरह से उस नीतियों को चुनौती पहुंचा, उस चुनौती को कम करना। दूसरा, डिपार्टमेंट का अंदर जो प्लेयर्स है, चाहे निजी क्षेत्र में हो चाहे डिपार्टमेंट का अपना प्लेयर्स हो, से फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर में तो अपना कृषि क्षेत्र में बात हो, तो ये सारे क्षेत्र में ये सेकंड जो वेव चल रहा है, उस वेव का दौरान क्या क्या क्षति अलग से हुआ, उसका नुकसान किस तरह से टारगेटेड वे में आप पूरा कर सकते हो या कम कर सकते हो, वो सारे चीज होंगे। और तीसरा, जैसे आपने कहा कि सेकेंड वेव जब खत्म होएगा, उसके बाद वो जो वक्त है, उस वक्त में
किस तरह से अलग से अगर जरूरत पड़े राहत का कुछ नीति लेके आया जाए, रिलीफ मेजर्स कुछ अलग से अनाउंस किया जाए, जहां पे बहुत जल्दी हम वापस आ सकते। एक चीज अब मत भूलिए सोनू, पिछले साल भी हम देखे हैं कि कोविड के बाद करीबन 1 तिमाही हम लोगों को लगा नीतिगत रूप से ओवरऑल इंडस्ट्री कहे या ओवरऑल एग्रीकल्चर सेक्टर कहे वापस फिर से पटरी में वापस आना, तो उसका एक एक्सपीरियंस ऑलरेडी है। और मैं मानता हूं हालांकि इस बार मामला और ज्यादा खराब है क्योंकि इस बार आंकड़े बहुत ज्यादा है पिछली बार के हिसाब से, लेकिन एक जब आपका एक्सपीरियंस रहता है कि किस तरह से फास्ट टारगेटेड रिलीफ मेजर्स को द्वारा आप वापस लेके आ सकते हो पटरी में अपना सेक्टर्स को, तो यहाँ पे भी ये कोशिश बिल्कुल किया जाएगा। अब ये देखना है कि इस दौरान जैसे नुकसान लोगों को हुआ है और सिर्फ डेथ नहीं, इसमें लोग इमोशनली भी काफी शैटर्ड रहते हैं और एक इमोशनली शैटर्ड नेशन को वापस ले आने में भी वक्त ज्यादा लगता है क्योंकि इस बार कम से कम 20 गुना ज्यादा लोग अफेक्ट हुए कंपेयर टू लास्ट टाइम। जी एब्सोल्युटली। सो सेंटिमेंट जी सो इकोनॉमिक सेंटिमेंट, हालांकि आज शेयर बाजार में तो अच्छी खबर है। लेते हैं शेयर बाजार की खबर। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.9% की वृद्धि से 424 अंक बढ़कर 48,678 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.8% की वृद्धि से 121 अंक बढ़कर 14,618 पर बंद हुआ। व्यापक बाजार की बात करें तो बीएसई मिड कैप सूचकांक 1.1% की बढ़त में रहा और स्मॉल कैप सूचकांक में 0.8% की वृद्धि दर्ज हुई। Let's have a look at the rupee story as well, Sonu. रुपए पर नजर डालें तो अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 6 पैसे कमजोर हुआ और $1 की कीमत 73 रुपए 91 पैसे दर्ज हुई। Jento, what's your read on market performance today? The best performing sector was pharma, which went up by 4%, and along with that, Bank Nifty went up by almost 2%. So you think it's in sync with the RBI announcement for liquidity support for COVID-19? Is that the real reason why the bank really went up today along with privatization of IDBI? Well, there was a specific movement in the bank having, not performed well in the last 4 to 5 days average, if I say so. And obviously the policy announcements to some extent brought back some, if not cheers, at least some happy moods within the day today. But what I believe is overall, Arjun, I think the 48 to 49,000 levels which the stock market is trying to really hold on is quite a commendable performance, given the scenario of every single day seeing a new high, and specifically when the nation is rolling between 3.6 to almost 4 lakh cases, new cases being adding up per day. So that's if you take on over a period of say 15 days. It's more than, almost 60 lakh of people being added in terms of new COVID cases. So if you look at those last 15 days sort of a period, and I think it's quite a commendable, performance of holding on. But this is also reasons of why, the stock markets are holding on. One is, the good first quarter results. Sorry, not the first quarter results, the good last quarter results of the previous fiscal, ending 31st March. Some of us which are keep on tinkering in. Although some of the performances have not been as per the market, expectations in terms of, sentiments and all, but they have still performed well. The GST collection, as you know, has been one of the best in April. So that is also maybe something which has gone down well in the market. And overall, globally, the markets also have been holding on to the levels except for the India scenario. Globally we have got good triggers in what is happening in terms of, new industries supporting, in terms of, the specific packages which are being announced, including the one which has been announced in the US and things like that. But coming back to India, I think the challenge for the whole month of May would remain in terms of where the stock would be headed. We thankfully didn't have a free fall as we saw last year. Of course, it was also led by a global free fall of stocks. But this year, despite such a huge pain in terms of COVID numbers across the nation, I think the market holding on is something which we really appreciate. आपने ग्लोबल मार्केट्स की बात की तो चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले उन पर नजर डाल लेते हैं। एशियाई बाजारों में आज गिरावट का रुख रहा। ये गिरावट यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी जैनेट येलन के इस सुझाव के बाद आई कि ब्याज दरों में वृद्धि करने की जरूरत पड़ सकती है क्योंकि सरकारी खर्च के उपायों से मुद्रास्फीति में वृद्धि होने की संभावना है और अर्थव्यवस्था में तेजी आ रही है। हांगकांग का हैंगसेंग 0.5% के नुकसान में रहा और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक 0.8% की गिरावट में रहा। जापान, चीन और दक्षिण
कोरिया के बाजार आज बंद थे। यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो यहां के बाजारों में तेजी का रुख था। कमोडिटी की कीमतों में उछाल से खनन कंपनियों के स्टॉक्स को बल मिला। इसके अलावा कंपनियों की आमदनी में उछाल बना रहा, जिससे बाजारों की धारणा सकारात्मक बनी रही। दिन के कारोबार में ताजा समाचार मिलने तक लंदन का फुटसी 1.2% की बढ़त में था, फ्रांस के कैक में 1.1% की बढ़त थी और जर्मनी का डैक्स 1.5% के उछाल पर था। Moving on to the US market, Dow Jones Industrial Average gained 20 points to end at 34,133, but the S&P 500 lost 28 points, 0.7% to close at 4,165, and the Nasdaq Composite dropped 262 points or 19% to 13,634. On Wall Street, Nasdaq ended sharply lower today as investors dumped mega-cap growth stocks to seek shelter in more defensive parts of the market amid concerns on rising interest rate and uncertainty over an upcoming jobs report. High-value technology-related companies including Microsoft, Apple, Amazon and Facebook sold off across the board. Comments by Treasury Secretary Janet Yellen on the potential need for interest rate hikes further exacerbated the tech sell-off as investors worry high rates would weigh on valuations of growth companies. Very briefly, what's your take on the tech companies sell-off despite fundamentals and quarterly earnings? Well, I think that's an immediate, very short-term reaction to what we saw. Overall, I guess if I have to take a view for the next 3 to 6 months, the tech companies would keep on doing well and would go in for a forward progressive growth. And that only not limited to just the US markets. I think in India also, tech, pharma, banking, these would be the sectors typically that would march forward. Well, let's have a look at the oil market now. Brent crude climbed 93 cents to trade at $69.81 a barrel. U.S. crude futures added 85 cents to $66.54 a barrel. The global crude oil prices rose for a third day today as easing of lockdown in the U.S. and parts of Europe heralded a boost in fuel demand in summer season and offset concerns about the rise of COVID-19 infections in India and Japan. Very briefly, despite supply and demand constraints, don't you think that the prices are a bit high right now? Yeah, obviously. I mean, the prices are a bit on the higher side, specifically on the expectation that Europe would open up because its tourist season is about to start. And if not a gush of tourists coming in, at least they believe some of the countries would see an important tourist season markup, and as a result of which there would be some industrial activity leading to a bigger demand. But certainly at $69, I think it's a tad uneasy in terms of having an upper level of oil prices in this sort of a scenario globally. And briefly, अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं तो आपको लगता है कि उससे इकोनॉमीज की सेंटिमेंट पे नेगेटिव असर पड़ेगा? इस वक्त बेशक पड़ेगा, बिकॉज जो स्थिति बने हुए है अभी, कोशिश का मेन कोशिश ये है कि इंडस्ट्री को कितना जल्दी वापस लेके आ जाए पटरी पे। तो उसमें कोई भी ब्याज दर का चुनौती अगर सामने आ जाए तो इसमें बेशक एक सेंटिमेंटली एक बहुत बड़ा फर्क इसमें पड़ सकता है। एंड मे बी बिजनेसेस भी हिट हो सकते हैं, कंजम्पशन, शायद डिमांड भी हिट हो सकती है। दीज आर ऑल डिटर्मिनेंट्स ऑफ इस वक्त किस तरह से पैन अप होगा अगले 3 महीना, नॉट ओनली भारत में, ग्लोबली भी, क्योंकि भारत का इस वक्त जो दौर चल रहा है उसमें ग्लोबली भी इफेक्ट पड़ेगा। आप अगर देखें, यूरोप का लीडर्स ने, अमेरिका का लीडर्स ने भी बार बार पिछले हफ्ता भी एक बात कहा है कि इंडिया को इस तरह का स्थिति में जिस तरह का होकर रखा है वो अगर लगातार चलते रहे अनदर 1-2 महीना तो इसमें ग्लोबली भी बहुत फर्क पड़ेगा। तो वो निर्भर करेगा कि किस तरह से पैन अप होता है। और जैसे मैंने कहा, हम लोग को इस वक्त नीतिगत रूप से फोकस करना चाहिए वीक टू वीक। समय समाप्त हो रहा है तो हमें आपसे विदा लेनी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद जयंत। चलते चलते दिल्ली सराफा बाजार में सोना 317 रुपए सस्ता होकर 46,382 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। हालांकि चांदी 2,328 रुपए के उछाल से 72,598 रुपए प्रति किलो पर जा पहुंची। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना मामूली गिरावट के साथ $1,776 प्रति आउंस पर था और चांदी बिना किसी खास बदलाव के $26.42 प्रति आउंस पर थी। And before we close, a reminder of the headlines. RBI allows certain individuals and small borrowers more time to repay the debt. Banks to give priority loans to vaccine makers, hospitals and COVID-related health infrastructure. Cabinet Committee on Economic Affairs clears strategic disinvestment and transfer of management control of IDBI Bank. And at the stock markets, Sensex climbs 424 points. Nifty advances 121 points. And that's it in this edition of Market Mantra for now. Goodbye. Market Mantra.